Yes, that's the right answer. Minus 73.8 kilojoule per mole. Okay. So the next and the last part of the Gibbs free energy is the Gibbs free energy possibility in terms of exothermic reaction and endothermic reaction. So let's suppose if a reaction is exothermic. When a reaction is exothermic, then there is one possibility, and that possibility is delta H is equals to negative. I mean, the enthalpy change is negative. But the entropy of the system can be negative, and the entropy of the system can be positive as well. Which means if we see the equation of Gibbs free energy के अंदर it is enthalpy change as well as the temperature and stuff. So this is the equation we have. Now the possibility is this is maybe negative, or this one is negative. Here the possibility is that this one is negative and this one is positive. If this one is negative and this one is positive, तो फिर Gibbs free energy की value क्या आएगी overall? Negative value आएगी, positive value आएगी. और अगर आपके पास इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाती तो इसका मतलब क्या है? इट इज ऑलवेज फीजिबल. देयर इज अ चांस ना कि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ जाए. ये पॉजिटिव है तो ये बड़ी वैल्यू है, ये नेगेटिव है तो ये छोटी वैल्यू है. तो बड़ी वैल्यू का जो साइन होगा वो ऑटोमेटिकली आंसर के साथ आएगा. तो आंसर के साथ कौन सा साइन आएगा? तो साइन भी नेगेटिव. जब नेगेटिव का साइन आएगा तो ऑटोमेटिकली हम कहेंगे कि रिएक्शन इज फीजिबल. अच्छा, हियर दिस वन इज नेगेटिव और फिर इसकी ये सिनेरियो होता है कि जी दिस वन मे बी इज एट लो टेम्परेचर and this one maybe is at high temperature. अगर ये लो टेम्परेचर पे होगा तो अगेन इसके अंदर दो सिनेरियोज होंगे. क्या सिनेरियोज होंगे, कोई आइडिया है? कौन सी वैल्यू स्मॉल होगी लो टेम्परेचर पे, कौन सी वैल्यू बड़ी होगी? Which value will be smaller in this case if there is a low temperature? Both the values are negative. If both the values are negative, maybe one is at low temperature and the one is at high temperature. So this one is low temperature. If this one is, the enthalpy change is negative and in negative is a low temperature, तो इसका मतलब है इन दोनों में से which one was negative, which one was positive? Delta H was negative. Excellent. Very good. And this one is positive. तो इसका overall answer क्या आएगा? Negative. तो reaction इसके लिए क्या हो जाएगा? Reaction would be feasible. Here in this case, अगर higher temperature है तो higher temperature पे क्या होगा? This will be a positive, but this will be a small positive. बहुत बड़ी वैल्यू नहीं होगी. This will be a negative and this will be a large positive. तो value overall answer क्या आना चाहिए? Yes. And here the reaction will be not feasible.
देखो हाई टेम्परेचर में जितना ज्यादा हाई टेम्परेचर होगा द हीट विल गोइंग टू रिलीज अ लॉट व्हेन इट कम्स टू द एक्सोथर्मिक रिएक्शन but high temperature पे the value of entropy will be very large positive. Why large positive? Because they are extremely stable. Sure, Mohammed Abdullah. Okay, now let's quickly move on towards the negative one. Sorry, endothermic reaction, the last part of the day. And what is endothermic reaction? Endothermic reaction means delta H is positive. Now there are two possibilities. Entropy, it can be positive. Entropy, it can be negative. In endothermic reaction, when the entropy is negative, then it would be delta H minus T delta S. This is positive and this one is negative. Delta H is positive and not feasible. This one is positive. This one is also positive. This one would be high temperature. Or it can be low temperature also. ये इसकी दो कंडीशंस है कि अगर एंट्रोपी पॉजिटिव होती है तो एंट्रोपी पॉजिटिव हाई टेम्परेचर भी हो सकता है लो टेम्परेचर भी हो सकता है. इट्स लिटिल कॉम्प्लिकेटेड बट थोड़ा सा याद करने की जरूरत है तो याद हो जाएगा ये. बट आई एम पुटिंग अ स्टार ओवर हियर और जिसपे मैंने स्टार बनाया इसका मतलब ये है दिस इज समथिंग यू नीड टू लर्न कि अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा तो रिएक्शन की फिजिबिलिटी होगी या नहीं होगी और अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो रिएक्शन की फिजिबिलिटी होगी या फिर नहीं होगी. विद दिस वी आर डन विद द गिब्स फ्री एनर्जी is finished. Next class, inshallah ta'ala, we're going to start a new topic, principles of electrochemistry. But before that, I will upload some worksheets. And before next class, those worksheets needs to be solved. Otherwise, things will be tough. If you do not understand anything, you can always ask me. Yeah, sure, Sahil.